So yesterday was the test of chapter number 1. So let's discuss the test. Those who know the answer can give the answers and you have to check your answers side by side. First question, 2 raised to power equals to. Yes, Karthik? Yes, ma'am. Ma'am, option A 1. Okay, any other answer? किसी और ने कोई और आंसर किया हो apart from A option, that is 1. Any other student with some different answer? Okay. So 2 raised to power 0 is 1. Yes, the answer is correct. Those who have attempted the test, check your answers with me and give 1 mark if you have written the exact answer. So the correct answer is option A, that is 1. We discussed in the class also, any number raised to power 0 is 1. Any number raised to power 0 is 1. So that's why the A option is the correct answer. That is, answer is 1. Okay. Next is second part. Who gave the concept of 0? Yes, Akshara. Yes, ma'am. Who gave the concept? Aryabhatta. Yes, that is the A part. Very good. The answer is correct. The concept of 0 is given by Aryabhatta. That is A part. A part. Third question. A computer mainly consists of dash. A computer mainly consists of dash. Vaibhav. Ma'am, both. Yes, both. Very good. The correct option is C part. A computer mainly consists of both hardware and software. So that is why the option is C, right? Antivirus and file managers are dash. Antivirus and file managers are dash. Okay, Chehek. Ma'am, utility software. Yes, again the answer is correct. That is option A. Antivirus and file managers are the utility softwares. What is the base of hexadecimal number system? Adgun. Ma'am, option C 16. Very good. Once again, the answer is correct. That is option C. The base of hexadecimal number system is 16. क्योंकि जो 8 है that octal number system, 2 is for the binary and 10 is the decimal number system. Okay. Next is, how many digits are there in the decimal number system? How many digits are there in decimal number system? Harmeet. Yes, ma'am. 10. Very good. That is the D option. Total number of digits in the decimal number system is 10. Which of the following is or are the examples of spreadsheet software? Jasmeet. Yes, Jasmeet. Samriddhi. Yes, ma'am. Ma'am, D option, all of above. Very good. So all are the examples of the spreadsheet software, that is MS Excel, OpenOffice Calc, Lotus 1, 2, 3. So these are the examples of spreadsheet software. Which of the following utility compresses the contents of a disk? Which of the following are the which of the following utility compresses the contents of the disk? Savya? Are you checking the answers side by side? All of you? Yes, ma'am. So, bache, 8th part. Ma'am, file managers. Okay, the utility that compresses the contents of the disk, that is file managers. The Savya is saying any other answer?
किसी और ने कोई और आंसर लिखा? यस तन्वी। मैम हाँ जी। मैम मैंने लिखा है यस व्हाट यू हैव रिटन बच्चे? मैम डाटा कंप्रेशन. Okay, so Savya is saying file managers and you are saying data compression. Any other answer apart from these two options? Ma'am, my answer is also data compression. Okay. So yes, the correct answer is data compression. The correct answer is data compression, that is B part, because data compression is the utility which will compresses or reduce or shrink the size of the contents of the disk. So Savya, your answer is wrong बच्चे. I hope now the answer is clear to you. Meaning आपको clear हो data compression का? Data compression एक ऐसी utility है जो आपके disk के size को compress करती है, disk के size को reduce करती है. Okay. Next, ninth part is identify the example of customized software. Identify the example of customized software. Yes, Chehek. Yes, ma'am. Library management. Yes, the customized software is library management because rest of the options Oracle belongs to DBMS software. Disk management and network utilities are the utilities software. So library management is the customized software. Okay. Next is the 10th part. MS PowerPoint belongs to which category? Shubh. Yes, ma'am. MS Ma'am. PowerPoint. C option presentation software. Very good. The answer is C part. MS PowerPoint is the presentation software. MS Windows is a dash operating system. Goresh. Yes, ma'am. Multitasking operating system. Very good. MS Windows is the multitasking operating system, that is part C. Identify the functions of operating system. Karthik. Yes, ma'am. Identify the functions of operating system. Ma'am, D option, all above. Very good. That is the D part, all above. So the functions of operating system are managing system resources. It will manage the system security and it will also control the transfer of data, how your data is transferring. Okay. So that means all above, all are the functions of operating system. Android is an example of dash. And okay. Divang is raising hand. Yes, Divang. Ma'am, C operating system. Very good. Once again, the Android is an example of operating system. That is C part. The Ma'am, I have a doubt. Anji. मैम मेरी ना नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम थी तो फिर मेरे 1 से लेके 7 तक छूट गए थे. Okay. मतलब मैंने चेक करने रह गए थे मेरे. Okay. I will once again I will repeat the answer. Let me finish all. We will do the same thing again. Okay. I will repeat the answer so that you can cross check your answers. Next is the full form of ALUS. The full form of ALUS. Chitesh. Yes, Chitesh. Full form of ALUS, arithmetic and logic unit. Yes, that is the B part. The full form of ALUS, arithmetic and logic unit. Okay, the correct answer is B part. Last question, which of the following is a storage device? Jasween. Ma'am, answer is DVD, B option. B option, DVD. Very good. Because scanner and mouse kya hai? Scanner and mouse both are input devices. Printer is an output device and DVD is a storage device. Okay. So once again, I am repeating the answers. Cross check kar lo.
First part 2 raised to power 0 is equivalent to 1. That is A part. Who gave the concept of 0? That is Aryabhatta. Again A part, the option. Third part, a computer mainly consists of dash, that is both hardware and software. So the correct answer is C part. Antivirus and file managers are dash. Antivirus and file managers are the utility softwares part A. What is the base of hexadecimal number system? So the base of hexadecimal number system is 16, that is part C. How many digits are there in the decimal number system? Answer is 10, D part. So the total digits are 10 in the decimal number system. Which of the following are the examples of spreadsheet software? All above. All are the examples of spreadsheet software. Which of the following utility compresses the contents of the disk? That is B part, data compression. Example of customized software is library management, option B. MS PowerPoint belongs to which category? It belongs to presentation software, that is C part. MS Windows is your dash operating system, that is multitasking operating system. Android is an example of operating system, that is C part. The functions of operating system are manages system security, manages system resources, and it also controls the data transfer. The full form of ALU is arithmetic and logic unit, that is B part. Which of the following is a storage device? That is DVD, again B part. So I hope all the answers are clear and you have checked it side by side, all of you. So give yourself marks out of 15. How many marks you have scored out of 15? Check your sheets yourself and give marks. So very good. Item code I1, I2, I3, I4. Give formatting, put it in the center. And here I'm writing, I'm again merging it. Total amount that a particular customer will pay. So here I will apply the formula for this. Now borders. Now here you will be applying some formula where you will calculate the total price. And here will be the last final amount that is being payable. Now the item 1, let it be pen, eraser, pencil, sellotape. Let it be the price per unit. एक item का price अगर pen 10 का है, eraser let it be 5, pencil let it be 5, sellotape let it be 20. Now the number of quantities that you have ordered, let it be 100 pens, then 50 pencils, and then sellotapes. Now here you will be calculating the total price for each of the item, right? So what will be the formula here? That is equal to H8. क्या करेंगे? Multiply by quantity. प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे. अगर आपने 10 पेंसिल्स परचेज करी हैं, एक पेंसिल 1 रुपए की है, तो आप 10 into 1 इतना ही पे करके आओगे शॉपकीपर को. क्लियर है ना फॉर्मूला? सो दैट्स व्हाई H8 into I8. So 100 क्वांटिटी ली है, 10 रुपीज का एक पेन है, तो यू विल बी गिविंग 1000. So I am copying this formula to all the cells
तो जब मैंने कॉपी किया तो मेरा कंटेंट चेंज हो रहा है। 1000 वाले सेल में देखो फॉर्मूला बार में इक्वल टू H8 इंटू I8, in the next cell H9 into I9, H10 into I10, H11 into I11. मैंने तो नहीं फॉर्मूला प्रोवाइड किया, I have written the formula only once in the cell J8 and rest of the cells automatically get changed. When I copied this formula using the autofill, the rest of the content is automatically getting changed. The formula is automatically getting changed. तो ये कौन सी रेफरेंसिंग हुई फिर जिसमें कंटेंट आपका चेंज हो रहा है? What do we call to this referencing? Yes, Akshara? The case in which the addresses will get changed on copying, उस referencing को, उस addressing scheme को हम क्या कहते हैं? Ma'am, cell referencing. But which type of cell referencing we used to say? कौन सी referencing है? I told you. अभी रेफरेंसिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने बताया ना, सी ये हमने अभी करी 3 तरह की रेफरेंसिंग, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। तो इसमें क्या है, सिंपल फॉर्मूलाज है, कहीं पे भी कोई डॉलर साइन नहीं लगा हुआ, और जहां पे कोई डॉलर साइन नहीं होता और जहां पे कंटेंट हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो वो कौन सी एड्रेसिंग है? दैट इज रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, बिकॉज नो डॉलर साइन इन द फॉर्मूला, कहीं पे डॉलर साइन यूज नहीं हुआ और कंटेंट हमारा अपने आप चेंज हो रहा है, फॉर्मूला अपने आप चेंज हो गया नेक्स्ट सेल पे जाके, हमने नहीं किया, फॉर्मूला इज ऑटोमेटिकली गेटिंग चेंज व्हेन वी आर पेस्टिंग द कंटेंट, and the case in which the formulas are automatically get changed according to the cell address where you have pasted the formula, so that is called relative addressing. तो ये relative addressing का केस है जहां पे अपने आप फॉर्मूला चेंज हो रहे हैं जब आप इसको पेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? नाउ एट लास्ट टोटल अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट, सो इक्वल टू कैसे निकलेगा ये चीज, दैट इज J8 प्लस J9 plus J10 plus J11. So now you can see I have got the answer, that is total amount being payable. Clear? So this worksheet is clear bachche to everyone. The relative addressing scheme, this is clear to all. Now let's discuss regarding the absolute. So in C, in the absolute I have told you the content will not change on pasting. जब आप एक सेल से दूसरे सेल में ऑटोफिल से जाके पेस्ट कर रहे हो कंटेंट को, तो कंटेंट चेंज नहीं होगा, and there will be $2 signs, so it will not get changed. So for example, let it be, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट है हर किसी को मैंने 10% डिस्काउंट देना है, so this is fixed that I am giving 10% discount. ठीक है, तो ये हमारा फिक्स्ड है, तो मतलब 10% हर आइटम के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज G12. G12 में डिस्काउंट पर है, वो फिक्स्ड है, तो जो चीज फिक्स्ड है वो क्या बन जाएगी, उसके आगे एब्सोल्यूट बन जाएगा। तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू पुट $2 साइंस। अब मेरे को यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है, सो डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस के लिए बच्चे व्हाट विल बी द फॉर्मूला, जितना टोटल प्राइस आपका यहाँ पे निकला इसके ऊपर आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो, दैट इज कौन से सेल पे दे रहे हो, दैट इज ऑन J8, सो इक्वल टू J8 मल्टीप्लाई कितना डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट की वैल्यू कहाँ से आएगी, फ्रॉम दिस सेल G12, और G12 जब हम कॉपी करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, सो इसीलिए वी हैव टू मेक इट एब्सोल्यूट, तो $12 so that इसकी वैल्यू चेंज ना हो, इट विल बी फिक्स्ड फॉर एवरी आइटम, सारी आइटम्स के लिए यही फिक्स्ड रहेगा। सो सी आई हैव गॉट द डिस्काउंटेड प्राइस हियर, क्लियर?
Now when I will copy this formula, so you can see J8 multiply by $G $12. यहाँ पे क्या था H8 into I8 और हम जब इसको कॉपी करें we are getting H9 I9. अपने आप फॉर्मूला चेंज हो रहा था. Now look at this case J8 $G $12. तो डॉलर वाला तो फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, so it will not change. But J8 ध्यान से देखो J8 क्या है, रिलेटिव है, तो रिलेटिव ने तो चेंज होना है. तो जब हम नेक्स्ट सेल पे फॉर्मूला देखेंगे you can see it's J9. So J8 is being changed into the J9. तन्वी look here. बाद में आपको समझ नहीं आएगा फॉर्मूला फिर. So J8 is changing to J9. Clear? So this is relative. So that's why it is changing. तभी J8 से J9 हुआ. But absolute क्या था? $G $12. Next cell में देखो $G $12 ही रह रहे. So that is fixed. Fixed कैसे हुआ? क्योंकि हमने dollar signs लगाए हैं. So similarly in the next case J10 change हो रहा है, but $G $12 again. So that means हर cell पे 10% का discount मिल रहा है. So it is fixed. The cell address that is fixed. So the value will be fixed. That is absolute cell addressing. Clear? After discounted price, what you will get now? You will get final price. कि आपने अब टोटल फाइनल प्राइस कितना पे करना है. So this is the thing. अभी यहाँ ये आपका कैसे निकलेगा? टोटल प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तुम्हारे पास फाइनल प्राइस आ जाएगा. That is equivalent to J8 minus K8. जितना टोटल अमाउंट था, जितना आपका प्राइस बना है, उसमें से आप डिस्काउंट जब लेस कर देंगे, so you will get the actual final price that you have to pay. So similarly, we can calculate rest of the amounts in the same way. So let's autofill. So, and here you will be getting equal to sum, that is L8 colon last value is L11. So total amount 1800 you have to pay now. After discount, this is the price after discount. So the concept of relative and absolute addressing is clear. Any doubt to anyone in this? सिंपल सा हमने पहले टोटल प्राइस तक देखो बच्चे रिलेटिव निकाला. रिलेटिव में सिंपली एड्रेसेस आपके चेंज हो रहे हैं. वैल्यू इज गेटिंग चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वेयर यू हैव पेस्टेड, ऑन विच सेल यू आर पेस्टिंग. सो दैट इज फिक्स्ड. बट उसके बाद हमने डिस्काउंट देने कि हम हर आइटम पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और 10% शुड बी फिक्स. ये नहीं है कि 10% अगले वाले पे 11 आ रहा है, अगले वाले पे 12 आ रहा है. सो इट इज फिक्स्ड वैल्यू. तो फिक्स्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? वी शुड मेक इट एज द एब्सोल्यूट, एंड फॉर मेकिंग एब्सोल्यूट देयर शुड बी $2 साइन. तो मैंने रो के आगे भी डॉलर लगाया, कॉलम के आगे भी डॉलर लगाया, जी के आगे भी डॉलर है, 12 के आगे भी डॉलर है. तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लगा के J8 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट जितना भी आपने दिया है, सो वी आर गेटिंग द डिस्काउंटेड प्राइस हियर. एंड आफ्टर दैट टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस, वी आर गेटिंग द फाइनल प्राइस दैट इज बीइंग पेबल ऑन ईच आइटम. एंड एट लास्ट 1800 वाले पे फॉर्मूला क्या है? ऑल द फाइनल प्राइस दैट वी गॉट आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस. तो हमने उसका टोटल सम निकाला कि अब हमने शॉपकीपर को कितना पे करना. क्लियर? सो दिस today we have studied the concept of relative and absolute. Once again you can look, in case of relative, look at the formula bar. Content is changing, the formula is changing. जहाँ पे भी सेल आगे आगे जा रहा है तो आगे आगे जाके सेल और फॉर्मूला की वैल्यू बोथ विल गेटिंग चेंज. बट डिस्काउंटेड प्राइस में हमने G और 12 को हमने डॉलर लगा के एब्सोल्यूट बनाया हुआ है. सो इट इज फिक्स्ड इन एवरी सेल. हर सेल में G और 12 ही रह रहे हैं. G और 12 की वैल्यू ही रेफर हो रही है, दैट इज 10%. तो एब्सोल्यूट मींस $2 साइंस. द टॉपिक इज क्लियर. Two types of addressing, relative and absolute. Mixed we will do tomorrow. Yes, Karthik. Yes, ma'am. You are raising hand. Any doubt, बच्चे? No, ma'am. Ma'am, पहले से ही रह गया होगा. Okay, okay. So the topic is clear.
Both types Yes, of ma'am. referencings are clear. Okay बच्चे, so that's all for the day. एक बारी दोबारा से relative and absolute की do the practice yourself using by doing practical. Excel में खुद से ये वाली same worksheet बनाओ, so you will be more clear with the concepts. Okay.